नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत। नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर उग्र बिलासी पारा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सीजेपी छात्र समाज का विरोध। दिल्ली नहीं, इस बार धुबरी जिले की बिलासी पारा में नीट घोटाले को लेकर कॉलेज के छात्रों छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। देश भर में सनसनी पैदा करने वाले नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड के विरोध में धुबरी जिले की बिलासी पारा में उग्र माहौल बन गया। सीजेपी छात्र समाज के तत्वाधान में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में प्ले कार्ड और विभिन्न नारों के जरिए नीट घोटाले की सही जांच, दोषियों को सख्त सजा और देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता व न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि ऐसे प्रश्न पत्र लीक की घटना ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य को अनिश्चितता के दलदल में धकेल दिया है। इसीलिए इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को পণ্য হৈ গৈছে, বজাৰত বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰীৰ নিচিনা পণ্য হৈ গৈছে এডুকেশ্যন। সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে যিমান বিষয়ববীয়া জড়িত হৈ আছে সবকে এই আওতাত আনিব লাগে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে, কিন্তু দিল্লী পুলিচে যিভাৱে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ চলাই আছে, তেওঁলোকৰ সেই দিল্লী পুলিচৰ বিৰুদ্ধে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। অতি সোনকালে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান লগতে বিজেপি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ পদত্যাগ কৰিব লাগে। We don't want to. I can say that which type of democratic country is this? আমি ইয়াতে স্টুডেন্ট থেকে ইমান কষ্ট কৰি দিল্লীত ইমান প্ৰটেষ্ট হৈ আছে, স্টুডেন্ট বিলাকক মাৰি তেখেতৰ ইমান বেয়া অৱস্থা কৰি পেলাইছে। এইটো আমি ইয়াৰ পৰা জাষ্টিছ বিচাৰোঁ আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ যে আমাৰ কাণ্ট্ৰি ফিউচাৰটো যাতে ভাল হয়। এইটো আমাৰ নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট। আৱাৰ নেশ্যন শুড বি ইন আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি। আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু পলিউশ্যন হৈ আছে, এইবিলাক কোনেও কেয়াৰ নকৰে। তোমাৰ আজি যে আন্দোলন কৰা মুখ্য উদ্দেশ্য কি আছে? নীটৰ কাৰণে আৰু বাকী প্ৰব্লেমছবিলাকৰ বাবে। যদি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰে কি কৰিব? ইয়াৰ পিছত কি আন্দোলন কৰিব? ইয়াৰ সকলোৰে বাবে এইটো